हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे डी हम। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका इंटरनेशनल बिजनेस में मॉड्यूल 3, जिसमें हम कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे अबाउट योर इंटरनेशनल बिजनेस। यूनिट का नाम रहने वाला है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका यूनिट का नाम रहने वाला है। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो एवरी इंटरनेशनल बिजनेस हैज़ टू फेस द वेरियस इश्यूज related to the organization policy. These organization policy are being addressed carefully in order to keep the business healthy and profitable. Although there is a numerous issues, both small and big firms के लिए अलग अलग issues होता है. We primarily concentrate only on the major issues that we need, such as a centralization and the decentralization के बारे में हम देखेंगे. तो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन इज अ सिस्टमैटिक एंड अ कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन सेंट्रलाइजेशन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड कैपेसिटी लाइज इन फ्यू selected employees. The implication of the centralization are decision making power is reserved at the top level. Operating authority lie in the middle level managers. Operation at the low level directed by the top level. Almost every important decision in the operational activity at the lower level are being taken by the top management. Decentralization is a systematic distribution of authority at all the levels of the management. In case of the decentralized entity, major decisions are being taken by a top management to build the policies and the concerning the entire organization. Remaining authority is delegated to the mid and a lower level manager. Use of the subsidiary board of director. International firm, especially the fully owned ones, usually have the board directors to oversee and direct the top management. The major responsibility of the board members are advise करना, improve करना, appraise करना local management को, help करना the management unit in providing the response to local condition, assess the top management in strategic planning में करना, and supervise करना for ethical issues को. The four different kinds of the organization structure mentioned below are the पहला आता है आपका administrative structure. Administrative structure include the specific level of regularization regularization. They are being preferably suitable for the greater scale and a larger multi-phase organization, most compelling on the extraordinary structure. The stress between the non-administrative and the administrative structure is resounded with difference between a gradual and the automatic structure. फिर हम देखेंगे आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है. फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर विच इंक्लूड द अंडरटेकिंग लाइक सुपरविजन, डायरेक्शन, management, allocation, responsibility. The organization structure select how the process and present and the organization can carry. ठीक है. Then comes a divisional structure. The divisional structure, which is also called as a product structure, is an arrangement of a business that break down the organization into the separation which is being concentrated with. Then comes a matrix structure. The role and duty inclined to be considerably more complex, defined in the matrix structure. Matrix structure both employed by both the function as well as the product. A matrix company over and over again exploit and develop the group of the staff to accomplish the task, so as to take the advantages the power in order to hide the weaknesses and reorganizes in a practical form. Control mechanism play a very important role in a business organization, without which the role of a manager get constrained. ऑब्जेक्टिव द कंट्रोल क्या होता है? दे आर द थ्री बेसिक ऑब्जेक्टिव्स विच इंक्लूड्स द डेटा क्लूज ऑफ अ टॉप मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग एंड एडजस्टिंग अ डिसीजन एंड ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव. टू गेट द क्लूज बेस्ड ऑन विच द कॉमन objective can get be optimum coordination among the unit to evaluate the performance metrics and manager. Type of the control mechanisms. क्या क्या टाइप होते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म के? पहला आपका पर्सनल कंट्रोल. The personal control are being achieved via personal contact with subordinate. ठीक है, सबॉर्डिनेट से पर्सनली कांटेक्ट करके. इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड. इट इज़ अ मोस्ट वाइडली क्या होता है जी? यूज होता है कंट्रोल मैकेनिज्म इन अ स्मॉल फॉर्म्स फॉर प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट सुपरविजन एंड द ऑपरेशन एंड द एम्प्लॉय के मैनेजमेंट के लिए. Terms comes with bureaucratic control. These are associated with the inherent bureaucracy within the
international form. This control mechanism in the correspondent to some important rules and procedures to direct and influence the action and the subunit. The most common example are the capital spending rules हम देख सकते हैं. Then comes to output control, cultural control. ठीक है, ये है. अब क्या क्या अप्रोच होते हैं. अप्रोच कैसे होते हैं आपका दिया are the 7 major approach of controlling the business organization. These are being discussed below. जैसे आपका होता है मार्केट अप्रोच. द मार्केट अप्रोच says that the external forces shape control mechanism and behavior of a management within an organization unit like MNC. Marketing approach is applied to an organization having a decentralized culture. In such organization, transfer the prices are negotiated openly and freely. A decision-making process in this approach is largely directed by governed by the market forces. Then comes the rule approach. The rule approach lies into the rules-oriented organization where the greater part of a decision-making जो होता है क्या होता है वो इम्पोज होता है बाय ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना वही इम्पोज किए जाते हैं. इट रिक्वायर हाईली डेवलप्ड प्लान्स एंड बजट सिस्टम विच इज एक्सटेंसिव फॉर्मल रिपोर्टिंग. द रूल्स अप्रोच of the control utilizes both the input and the output control of the organized and exclusively formalized manner में करते हैं. Then comes your reporting culture. Reporting culture is a powerful control mechanism. It is used while allocating the resources. Rigid subsidy measurement performance evaluation मैनेजमेंट कहते हैं परफॉर्मेंस को evaluate करती है. द सब्सिडी मेजर फॉर अचीव अपने परफॉर्मेंस को फ्यूचर में कर पाए. कॉस्ट एंड अकाउंटिंग का कंपैरिजन होना भी बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले यूनिट की तरफ. तो ये आपकी यूनिट होंगी 2 पार्ट्स में. तो सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा.